we can actually start off with some preliminary slides before I go into talking about today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall that steps which have been taken earlier have been announced variously at different times. And because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the Parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, the fund that was launched. So, and therefore such steps have been taken. Clearly, these are the ones which are going to initiate a lot of things that we want to tell today and also a lot of things that we want to do towards building an Atma-Nirbhar Bharat. So if we can go to the first slide. The policy reforms to fast-track investments. In the last couple of months, an empowered group of secretaries has been formed who also looked at project development, and project development cells were formed in various ministries. Ranking of states on investment attractiveness is also being worked out. This will make them compete for new investments, and promotion of champion sectors such as the solar PV manufacturing and so on, the advanced cell battery storage research. These kind of activities are also being given a priority. So for an Atma-Nirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial, and we want to make sure that efforts which have been taken clearly give us the confidence that Make in India, which was launched at least 3 years back, as an initiative to change the mindset of people, to bring in new ways of doing business, to make sure that India becomes attractive on its strength, are all being received very well. So today, if I look at Make in India for Atma-Nirbhar Bharat, the foundation was laid earlier, and many investors have found that India's market, size of India's market, the aspirational middle class, the rule of law which prevails, and also making sure the talent pool which exists in India makes India an attractive destination for producing for India and also for producing in India and exporting from India. So that is exactly what has been shown here, and incentive schemes are being given for these champion sectors. So we need to clearly understand the purpose with which, when we talk of Atma-Nirbhar Bharat, it is on all these steps building India's strengths. The next slide would show you that attempts and also efforts have already started for upgradation of industrial infrastructure. I'm saying all this because the reform steps that I'm going to announce will have all these also having a play in the various steps that we are announcing. Upgradation of industrial infrastructure is something which we need to talk about afresh, although industrial infrastructure, industrial land banks, and also clusters have been recognized long time back. But they're all somewhat being utilized, many of them lying unutilized. So now, using technology, we are making sure these land parcels are, through GPS, GIS mapping, are able to be identified, location cleared, their challenges being identified, common facilities which have to be created will all be done. 3,376 industrial parks and estates and SEZs have between them, have among them
5 lakh hectares, all of them mapped as industrial information system can map them for future use. So this will be a part of the portal which we'll be running, so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working with the center is going to provide all the common facilities. So all industrial parks also will get ranked by 2020-21, so that we know what is the level of readiness that they have and how ready they are for competition. So with this said as a broad introductory statement, I just want to highlight the 8 sectors about which we are going to talk, where reforms are being brought in: coal, minerals, defense production. I read out separately the next 3, although they together contribute for flying, airports, and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair, and overhaul. So those 3 all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories. Space sector, where ISRO and others have been flag bearers for India. Atomic energy. So 8 sectors, but I will be showing you about 10 to 12 slides, all of them explaining each one of these sectors in detail. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं चाहे एमएसएमई की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की हो, एपीएमसी एक्ट की बात हो, इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है। एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र, जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहाँ जहाँ नीतिगत बदलाव चाहिए वहाँ वहाँ नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई। चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहाँ पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे
वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट, SEZ, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि IIS पर मिलेगी, जिसकी GIS मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी ज़मीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी। ज़मीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा। और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को ज़मीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा।